Khubi Khaleeq, who is a clinical psychologist. And I would like you to introduce yourself a little bit so that people can know who you are and what you've done for different individuals, for singles, for couples. Okay, sure. So my name is Khubi Khaleeq and I am a clinical psychologist. I have been working with the clinical and non-clinical population for around 5 years now. A lot of the clientele that we do have is definitely married couples, a lot of concerns that they're having प्रीमैरिटल काउंसलिंग की तरफ से भी लोग आते हैं और मैरिटल काउंसलिंग के लिए भी मैरिज काउंसलिंग के लिए भी लोग आते हैं ऑफ कोर्स दैट इज वन एरिया दैट वी डू कंटिन्यूसली वर्क विद बहुत आज जब आपने मुझे ये टॉपिक दिया तो मैं इसलिए भी इंटरेस्टेड थी इसमें बिकॉज आई अंडरस्टैंड एज अ मैरिड पर्सन एज वेल आई अंडरस्टैंड कि मैरिज बिफोर मैरिज बहुत सारे फियर्स इस तरह के होते हैं जो हमारे जहन में होते हैं and a lot of clients that also come up, they also share the same concern when they are looking to get married. There are a lot of people who are looking for options such as Muzz and other aspects as well, other avenues as well. Lekin one thing that they do come with is a lot of anxious distress. It's a lot of fears that they're coming with. So I'm interested in talking about this and let's see what comes up. So glad to have you here. So, since आज का हमारा टॉपिक marriage challenges है और and how can we as individuals and how can we as couples cope with those marriage challenges? What do you think are some of the most important things that being a single or being someone who is married should consider when they're getting married or they already are in a marriage? Hmm. So, although Naya, there are so many things. It's a very broad topic to be discussed. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पे discussion हो सकती है. लेकिन I do feel कि बहुत ऐसे common experiences हैं जो हमारे culture और society के लिए particularly they're pretty specific, right? And a lot of clients that we do get, a lot of people who are thinking about getting married, they do share some particular common concerns. जिसमें से कुछ तो आई थिंक इस तरह के हैं कि अगर हमारे कल्चर में जॉइंट फैमिली का सिस्टम जो है वो बहुत कॉमन है अब वहाँ पे बहुत सारे क्लासेस आने का डर होता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग की बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है इन एडिशन टू दैट देयर आर वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स there are a lot of examples जिनके थ्रू हम लर्न करते हैं कि अच्छा what is a marriage going to be composed of उसमें होगा क्या Unfortunately, हमारी जो पिछली generations उनकी marriages were very very different and उनकी examples हमारे सामने होती हैं तो हम उन्हीं examples को लेकर चल रहे होते हैं और जब हम उन examples को देखते हैं तो we feel like oh ये तो बहुत unlikely है कि शादी अच्छी गुजर जाए in-laws अच्छे हों आपका partner अच्छा हो it's mostly coming from our own past experiences particularly those that we've seen around us so I think ये एक बहुत बड़ा challenge होता है when it comes to fear of getting married कि in-laws कैसे होंगे partner कैसा होगा and then again there are certain concepts which are very common in our culture in our society and आज I would like कि हम उस particular cultural aspect को लेकर जरूर चलें because this is most Desi so a lot of people who are coming here उन्होंने इसी environment में ही exist करना after they get married as well so I think that a few things such as ये अच्छा आपकी शादी से expectations क्या है आपकी partner से expectations क्या है आप जब एक शादी में जाते हो तो देर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट जो आप अपने साथ लेकर जा रहे हो जैसे हनीमून पीरियड एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जो हमारे लिए बहुत हम कॉमनली सुनते हैं एंड अगेन देयर इज अ रीफ्रेमिंग दैट थॉट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस बिकॉज हमने अपनी इतनी लाइफ के इतने सारे साल हमने इन चीज़ों को सुनते हुए गुजारे होते हैं सो और बोलना नहीं है कुछ कहना नहीं है अपनी बात नहीं करनी व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम me as a wife for example what are the expectations from a husband so a lot of things that can be talked about a lot of fears that we carry along when we're getting into a marriage and I think that that particularly becomes very challenging आप शादी जितनी आगे चलती जाए और अगर हमने वो कॉन्सेप्ट्स ना छोड़े हों हम उनको अनलर्न नहीं करते तो वो हमारे साथ साथ हमारी शादी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में कंटिन्यू रहते हैं so Because I totally agree. And I think something that's very common that individuals and singles do not understand, or even people who are married do not understand, is the honeymoon period. When the honeymoon period ends, and how to cope up with those feelings, and how to actually be more practical, and how to actually keep that aspect of honeymoon period alive throughout your marriage. So hmm. that's also something very interesting.
Yeah, all right. Okay. So yeah, it is interesting, but I do want to say here कि I think सबसे बड़ा concept जो हमें अपनी training में सिखाया गया वो जो skill सबसे बड़ा skill would be unlearning. And I think that that's so important when we're going into a marriage, when we're going into any transition of our life, but particularly marriage as well. Again, because इतने सारे concepts हम लेकर जा रहे होते हैं. Honeymoon period का concept I've learned it to be very different than जो हमारी society में चलता है usually. हम ये देखते हैं कि अच्छा कहा जाता है ओ शादी का तो हनीमून पीरियड द फर्स्ट 2 years 3 साल आप बहुत अच्छा रहेगा बहुत एंजॉय करोगे एंड देन इट गोज द ग्राफ गोज डाउन एंड नाउ व्हेन वी थिंक अबाउट हाउ relationships are how they work excuse me a very major concept that we're taking now is coexisting and coexisting is a huge challenge in itself जब हम हनीमून पीरियड की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में आता है कि अच्छा इनिशियली इंटीमेसी बहुत ज़्यादा होगी इनिशियली तो कोई टेंशन नहीं है कोई स्ट्रेस नहीं है आपने बस एंजॉय करना है एक दूसरे के साथ एक दूसरे का टाइम अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट द केस when we get into a marriage हम बहुत अपने सारे experiences interactions belief systems लेकर आ रहे हैं and the other person is doing the same and both of you sometimes with unhealed traumas a lot of baggage you're coming together in such an intimate space जहाँ पे आपको हर चीज शेयर करनी है आपको अनबर्डन भी करना है आपको नई चीजें भी सीखनी है आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नए रिश्तों के साथ भी एडजस्ट करना है सो हनीमून पीरियड हाउ कैन इट स्टार्ट इन द फर्स्ट 2 to 3 years I think that this is a very important concept to be unlearned and relearned आपका इनिशियल ईयर्स जो है वो आपके एडजस्टमेंट ईयर्स हैं जिसमें आप ये देख रहे हैं कि अच्छा मैं ये मेरा पार्टनर है वो भी एक इंसान है वो अपने बैगेजेस के साथ आया अपनी कंसर्न्स के साथ अपने फियर्स के साथ आया जस्ट लाइक मी उनके भी फियर्स होंगे और जो आप इनिशियल ईयर्स गुजारते हो वो आप इसमें गुजारते हो कि अच्छा हाउ डू आई एग्जिस्ट विद दिस पर्सन इन सच अ क्लोज स्पेस उसके क्या डूज एंड डोंट्स है मेरे क्या डूज एंड डोंट्स है बाउंड्रीज क्या है बाउंड्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन अनदर कॉन्सेप्ट जो आप अगर इनिशियली यू प्लेस देम इन द राइट पोजिशंस तो वो आपकी स्पेस को हेल्दी और सेफ बनाते हैं लेकिन फर्स्ट 2 to 3 years I would recommend to all the people who are looking to get married, give yourself that time. At least 1 to 2 years. तो आप एक साल कम से कम एक साल तो आप अपने आप को दें जहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि अच्छा उसकी आदतें क्या है मेरी आदतें क्या है उसके ट्रिगर्स क्या है मेरे ट्रिगर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझ पर डाली जा रही है मैं कितना कर सकती हूँ नाउ व्हेन यू एंटर अ मैरिज यू आर शिफ्टिंग सो मेनी रोल्स अब आप रिस्पॉन्सिबल हो यूर नॉट द वन हुज पैम्पर्ड अगर आप पहले नहीं भी पैम्पर्ड था पहले भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते थे लेकिन पहले आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते होंगे अपने घर वालों की दिस स्पेस देयर इज वेरी डिफरेंट अब अपने हस्बैंड की बच्चों की वाइफ की इन लॉज की बहुत डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे तो गिव योर सेल्फ दैट 1 year to adjust understand transition into the different roles that you have presently and then you'll see that the honeymoon period will start क्योंकि फिर आप ये देख लेते हो अच्छा मुझे उसके ट्रिगर समझ आ गए मुझे ये समझ आ गया मैंने कहाँ अपनी बात करनी है कहाँ उसको स्पेस देनी है कहाँ कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कौन सी मुझसे नहीं हो रही मैं अपनी कम्युनिकेशन पे काम कर सकती हूँ मैं इस पे काम कर सकती हूँ एंड देन यू स्टार्ट लिविंग अ स्टेबल लाइफ जहाँ पे कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है लेकिन जब हम इस कॉन्सेप्ट के साथ जाते हैं कि इनिशियल स्टेज आपकी हनीमून पीरियड है तो फिर व्हाट हैपेंस इज कि वो जब नहीं मिलता बिकॉज ऑफ कोर्स यू को एग्जिस्टिंग विद अ होल ह्यूमन बीइंग इन अ वेरी इंटीमेट स्पेस यू वुड गो लाइक ये क्या हुआ है ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी सो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो पहले से सेट होती हैं वो बहुत ज्यादा काउंट करती हैं तो अगर आप एडजस्टमेंट पीरियड की एक्सपेक्टेशन के साथ जाओगे तो you will get more time you will give more time to yourself and to the other person as well they're also adjusting with you just as much as you're adjusting with them so the Exactly. honeymoon period comes after that and I think that Yeah. that's a very important Yeah, concept that's very important. But what do you think कि ट्रांजिशन करने में क्या ऐसी चीजें जो कि बहुत हेल्पफुल रहेंगी फॉर इंडिविजुअल्स और फॉर सिंगल्स? अच्छा जो आपका लास्ट सेशन था समिया के साथ उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बातें कुछ की और उन्होंने ये बताया कि अच्छा यू नीड टू हैव अ रिलेशनशिप विद योरसेल्फ फर्स्ट बिफोर हैविंग अ रिलेशनशिप विद समवन एल्स आई फाउंड दैट वेरी वेरी एसेंशियल अगर आप शादी से पहले अपने ऊपर काम कर लेते हो तो फिर इट बिकम्स वेरी वेरी हेल्पफुल दैट्स वन स्किल जो आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगा यू बिकम मोर अवेयर ऑफ योर ओन सेल्फ आपको अपने ट्रिगर्स का पता चलता है आपको अपने रिएक्शन रिस्पॉन्सेस का पता चलता है सो व्हेन यू आर गोइंग इनटू अ मैरिज
what's happening then is that you have already learned, और अगर आपने नहीं भी किया, it's fine. आप learn करना शुरू करें at any point wherever you feel like अच्छा अब there might be a problem from my end, so work on yourself. उसके लिए आप थेरेपी लेना चाहो आप वो कर सकते हो, आप नहीं लेना चाहते तो आप इंटरनेट की जो कंजम्पशन है उसको आप जितना अपने लिए बेनिफिशियल कर सकते हो, इट्स अ चॉइस दैट यू आर मेकिंग, सो यू कैन यूज दैट टू सी कि अच्छा आप अपने रिस्पॉन्सेज को किस तरह से अपने आप को रेगुलेट किस तरह से कर सकते हो. तो लर्निंग इमोशनल रेगुलेशन इज समथिंग दैट रियली हेल्प्स. I think we're having a network issue, probably from Khubi's side, probably. Let's hope she can join in again. Can you hear me? Yeah, yeah, I can hear All you. right. I'm so sorry. I think I cut out It's first. okay. It's Right. okay. Lights Right. So I are was saying that is that emotional regulation is a very important skill that helps in the adjustment period. Second skill I would say is your flexibility. कि आप because knowing that okay मैं इन expectations के साथ जा रही हूँ, अगला person भी आ रहा होगा expectations के साथ, fears के साथ जा रहा हूँ तो अगला person भी fears के साथ आ रहा है, giving each other that space to find to exist basically. कि आपने अगले person के ऊपर इतनी आप responsibility भी नहीं डालो अपनी to fix you, और आप उसकी responsibility भी नहीं लो to fix them, right? You have to be your own person first so that the other person finds it safer to be aligned with you and the person that you are. Marriage is work. And I think that that's something again that we need to learn. So going with that expectation, initially it's an investment और मैंने उस पर काम करना है and then I'll see कि अब उस investment का फिर मेरे पास outcome क्या आ रहा है. So I think these few skills को emotional regulation हो गई, independence of your emotions, flexibility so that you're giving that other person that space. I think all of these skills can be very, very helpful when it comes to this. Exactly. मुझे ये भी लगता है कि जब हम सक्सेसफुली ट्रांजिशन कर लेते होते हैं और लेट्स से वी आर समवट okay with being into that new role, into that new relationship, coexisting at the same time with your own partner and with your own feelings and your own self is also something very important. How Yeah. would you like what would you like to say about coexisting in a relationship? I think it's very और challenging. coexisting का term हम कैसे normal सब आवाम को कैसे सिंपल करके समझा सकते हैं? How is that? Alright, सही ठीक है. अच्छा, so coexisting अगर हम बहुत बेसिक बात करें तो ये है कि आप I'll give an example ताकि हम थोड़ा इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें. कई दफा हम जब अपने घर में होते हैं बिफोर वी गेट मैरिड तो बहन भाइयों के साथ बहुत सारी चीजें हमारी ऐसी होती हैं जो वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट, वेरी पोसेसिव, ये नहीं ये मेरी चीज है तुम इसको नहीं यूज कर सकते. एक बहुत दफा हम ऐसे कर जाते हैं. लेकिन जब हम को एग्जिस्ट करते हैं दैट वुड मीन कि वो आपकी इंटीमेट स्पेस में आप किसी को इजाजत दे रहे हो कि दे कैन क्रॉस अ फ्यू बाउंड्रीज एंड दे कैन कम टू यू एंड लिव इन द सेम शेयर्ड स्पेस, जिसमें आपका अपना आप उतना हाईलाइटेडली एग्जिस्ट नहीं कर सकता जितना पहले करता था. बिकॉज हम को डिपेंडेंस जिसको हम कहते हैं कि आप अगले पर्सन पे 100% डिपेंड कर जाओ, हम उसको हम प्रेफर नहीं करते, इनकरेज नहीं करते, लेकिन इंटरडिपेंडेंस शादी में है. You need to depend on another person for a few things and the other person needs to depend on you for a few things. तो ये interdependence जब आप देखते हो और आप ये देखते हो कि अच्छा ठीक है so मुझे भी उसकी जरूरत है for some things, therefore they would also need us for some things. तो फिर आप एक इतनी shared space में आ रहे हो कि वहां पे आप clear 100% boundaries, ये मेरी चीज है और ये तुम्हारी चीज है, वो नहीं कर सकते. Sometimes, mostly, right? Although हाँ जब हम boundaries की बात करते हैं तो हम उस पर ये बात जरूर करते हैं कि अच्छा no, this is me and this is you. बट वो इमोशंस की तरफ. जब हम को एग्जिस्टिंग की बात करते हैं तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि हम एक इंटीमेट स्पेस में दे आर लिविंग विद देयर होल लाइफ and the whole baggage that they've been carrying for their whole life, and I'm bringing my baggage, and what we'll do now is that we will unwrap it
एंड देन वील सी इसमें से हम क्या चीजें चूज करेंगे कि ये हमने इस मैरिज में रखनी है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम बिहाइंड आवर बैक लेकर चलेंगे कि ओके दिस इज नॉट फॉर दिस स्पेस, this is for us to work on, right? That's where coexisting comes in, that you Yeah. need, because you cannot expect कि एक person अपनी हर experience को पीछे छोड़कर आएगा और फिर वो एक Hmm. बिल्कुल नया person बन जाएगा in a marriage to adjust with you. But We cannot well, expect. Yeah. I totally agree. आपकी interdependence वाले point से मुझे याद आया that I have had so many friends and so many um, cousins in my family who used to talk about कि I expect the other person to do everything. और जो आपने mention किया कि you would need the other person to do some things and you would also have to do some things. Understanding that point is also very important in marriage क्योंकि हम usually ये करते हैं कि हम कहते हैं कि अगला बंदा हमें 110% दे और हम शायद खुद जो है वो 20% दे रहे होंगे. How can we ensure that both of the genders, like the husband and the wife, can should be able to give their 100% and then see what happens instead of like expecting them to do everything or the other person to do everything in terms of emotions and everything else. Hmm. To that, I would say that work starts with your own self. जहाँ पे हम अपने आप से, okay, let's put it this way, we cannot give 100% in a marriage now, because हमने जैसे बात की initially कि अब शादी का concept, the institution of marriage has transitioned. अब वो इतने जेंडर रोल्स पे डिपेंड नहीं करता कि द हस्बैंड्स गोइंग टू गो आउट वर्क अर्न कम बैक एंड द वाइफ वुड बी लुकिंग एट द किचन एंड लुकिंग एट द चिल्ड्रन एंड देन दिस इज द जेंडर. अब बहुत चीजें आपको करनी पड़ती हैं, अब आपको एक दूसरे से रोल शेयर करना पड़ता है. इवन इफ लेट्स से आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट द वर्किंग क्लास, देयर आर सो मेनी पीपल फॉर whom the spouses are abroad, they're not in the same city, they're not in the same country, so what happens is that they have to take on the role of the partner as well. So no, when we don't give, we it's important for us to not expect us or the other person to give 100%, क्योंकि अब हम इतने divided नहीं है, अब shared है, अब बहुत सारी चीजें enmeshed है. So what we do is that we see communication is something that's very very important, and your expectations. Again, क्योंकि concept change हो चुका है marital institution का, it's important for us to know platforms like Muzz, Desi, they're giving that opportunity for people कि आप पहले बात करें, आप पहले अपनी expectations को communicate करें. This is so important. This is so very important. आप जितना बहुत सारे clients ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि अच्छा वो अगला person समझ नहीं रहा. And when we ask them, what have you tried? How have you tried to communicate? They say we haven't communicated, but since it's समझ जानी चाहिए. How? How does that person understand what's going on in your mind? Objectively, it's impossible. So जितना आप communicate करोगे, उतना ही आपके बीच में, आप दोनों के बीच में clarity होगी और आप दोनों की expectations aligned होगी. So what you do initially is, even अगर of course बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको शादी में जाने के बाद समझ आएगी, right? Coexisting के ट्रांजिशन में उसकी वो जब शुरू हो जाएगा तो उसके प्रोसेस में समझ आएगा. लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप इनिशियली डिस्कस कर सकते हो. आप अपनी एक्सपेक्टेशंस के बारे में सोचो, क्योंकि व्हाट डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्सन. And when you're doing that, then remind yourself, if I'm thinking this, it's likely that the other person would be expecting certain things from me as well. So you're flexible for your own self, hence you're flexible for the other person as well. Then communicate. I have had clients who have been parents for 10 years, and they've had conflicts about parenting styles, right? And if I do ask them, okay, what were your expectations before you had children? I was expecting this, I was expecting that, and when they're asked that were they aware? Was your spouse aware? No. Over 10 to 12 years of marriage, they have not communicated कि मैं क्या expect कर रही थी जब एक इतनी बड़ी transition होगी. And then of course the other person cannot guess, right? So communicate your expectations, clarify your expectations for your own self, communicate those expectations. और उन expectations में भी क्योंकि अब rules बहुत different है, तो you have to communicate in return again कि I hear you, I see your expectations, I will try my best कि मैं ये करूँ, लेकिन मैं 100% इस पे नहीं उतर सकूंगी. And I think that should be okay. And the other person would be expecting the same, and you would be expecting the same from them, that okay, I've given them what I'm expecting, but I understand that they would not be
meeting those expectations 100%. So ये Exactly. 100% वाला concept, perfection वाला concept, again, unlearning is something that can really help here. Totally. Unlearn them. Hmm. जो आपने ये बात बोली है कि एक्सपेक्टेशंस आपको तभी पता चलती हैं जब आप पूछते हो. I would share a story from my own personal experience. जब मेरी शादी होने वाली थी तो I actually took 1,000 tests from my husband. I used to give him scenarios कि अगर ऐसा हो रहा हो तो इस scenario में आप क्या करोगे, अगर ऐसा scenario हो तो आप क्या करोगे. That would Hmm. help me understand कि Absolutely. मुझे क्या मिलेगा आगे, मेरी expectations क्या होंगी. तो I think not asking is a lot worse than asking what you actually would need in the future and what the expectations would be. That's something very important. Absolutely. Again, we need to let go of the idea that because अब हम जब ये बात करते हैं ना mind reading की, तो we consider it a mental filter, we consider it a lens which is unhealthy. जब हम ये कहते हैं नहीं आप नहीं समझ सकते कि अगला person क्या सोच रहा है, तो we need to see that for ourselves as well that no, we cannot expect someone to read our minds if we have not spoken it out. And it's best to speak it out, particularly in prospects like marriage, because again you have to coexist with the person. It's a long-term commitment. Like I mentioned earlier, marriage is work. On everyday basis पे आपको नहीं होगा कि अच्छा मेरी उतनी उसी लेवल की अटैचमेंट है जितनी तब थी, या I love this person as much as I loved him 2 days ago. Maybe 2 days later you love that person again, but it's not an everyday thing. Everyday चीज क्या है? Effort. Just like just like any other relationship, this requires effort and it requires a conscious choice that I want to make this work, even on the low days. Exactly. So I totally agree with all that you said, and it's actually been lovely talking to you about the marriage challenges, and how can individuals actually cope up with them, or जो भी singles और जो भी couples हमें अभी सुन रहे हैं, they can directly contact Khubi Khaleeq on her account as well if they are looking for marriage and they have certain questions in their mind. If you're married or you have questions in your mind, Khubi is like one of the best people that I know who really does a great job at her work. Thank you so much, Thank Khubi. you so